मेरे ख्याल से अभी थोड़ा 1 मिनट का वेट कर लिया जाए, 2 मिनट का, कुछ और संख्या बढ़ने वाली है। ओके तो सर, 2 मिनट। ओके। ओके सर, थैंक यू। Hi everyone. Hello sir. How are you? Yeah. Why so quiet today? There's nothing. Everybody's quiet. Everything's okay. हाँ, everything is okay sir. Just 1 minute wait कर रहे थे. अच्छा, एक्चुअली मैं भी कहीं मीटिंग में आया था, तो थोड़ी पीछे बैकग्राउंड आवाज आएगी, तो थोड़ा सा आप लोग को बेयर करना पड़ेगा। विंसेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, वो कह रहा था ज्वाइन किया है, आप लोग को दिख रहा है वो? सर यूजर नेम कुछ है तो कीजिए. Yeah, he said he joined. Let me see. Okay. सर अभी ज्वाइन नहीं हुए विंसेंट जी ना? He said, yeah, is Vincent Vermeulen is here. Vincent. Okay sir. Okay. Make him host, yeah. Done sir. तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संजीत इंडिया से आप सभी को होस्ट और लीडर्स का स्टूडियो नेशन के इस मंच से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं एडम सर का, जिन्होंने हम सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो कभी कभी ही अपने लाइफ में आती है। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है हमारे साथ। अभी थोड़ी देर में ही हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर विंसेंट जी को जो एक ब्लॉकचेन और गेमिंग एक्सपर्ट हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे। इट्स अ वेरी न्यूज फॉर अस। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे ग्रेट फाउंडर एडम सर मौजूद हैं। उनके होने से ही हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो मैं इनवाइट करता हूं एडम सर का। वेलकम सर, आप आए और अपने व्यूज शेयर करें। वेलकम सर, वेलकम। Hi, Sanjay, thank you very much. Vincent, are you there? Can we hear you? Can you hear me? Yes, I'm here. Yeah, he is the guy. Yes, He is can you the hear me? man. Yeah, we can hear you. Yeah, Vincent, I think people are joining because I think they should reach at least. We have got only 50% present. But yeah, you can start. Start introduce. Vincent, जो है ये let me speak in Hindi and English both. Vincent, you have to bear with me. And hi guys, Yeah. Vincent is a very experienced, बहुत ही experience blockchain में है और gaming में है। इन्होंने काफी चीज अचीव की है और ये काफी बड़ा इन्होंने एक गेम बनाया है किंग्स ऑफ किंग के नाम से है, जिसका मैंने पीडीएफ शेयर किया है। और इन्होंने बाइनेंस से इनका कम्युनिकेशन हो रहा है। बाइनेंस बहुत एक्साइटेड है लेने को, और विंसेंट जी ने बहुत इच्छा जाहिर की है कि वो हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बढ़े। और मैंने उनको बोला हुआ है कि हमें आपको कम्युनिटी के साथ हम हर काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा जो था ये प्रोजेक्ट में नहीं था, ये नया प्रोजेक्ट है। ऊपर वाले ने गॉड हैज गिवन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो मैं चाहता हूं कि आप विंसेंट का वो विंसेंट एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट्स द गेम अबाउट, उससे हाउ द कम्युनिटी कैन बेनिफिट, हाउ सेलिब्रिटी कॉइन बी बेनिफिट। सो ही इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ 10-minute speech, and please bear with us. And
Vincent, you can start and then I will explain them in Hindi. Thank you very much, Vincent. That's fine. So let me just start by saying, when it's only 10 minutes, I'm gonna like go through it, the main things. But the rough like start is that I'm the head of a new gaming studio. We're setting up shop in Sri Lanka, in Port City in Sri Lanka, actually. I'm recruiting additional developers, but right now we have 9 people working full-time on the game, has been doing that for 7 months. We plan to be about 7-8 months until full release again, but we are waiting to ramp up. I have about 19 other people from like other parts where I have them on my kind of my freelance lists. We use them from time to time, but we want them to be full-time as well. So about 9 people working full-time. We have 19 people, very skilled, highly seasoned, experienced in game development. I myself come from a background where I've done a lot of work for gaming studios like Blizzard and Tencent on Fortnite and on some of the AAA games. So basically, King of Kings is a sci-fi space world, and it's a socioeconomic, community-driven GameFi project, which means that community is everything. And the backstory behind these lions, humanoid lions, is that they actually drove themselves too much in terms of destruction. So they actually ended up destroying or kind of breaking the universe, annihilating 80% of all life. And these kings, which is like a subset of hundreds, if not thousands of kings that all battled to become King of Kings, they had to come together and make new changes. So what they did was that they came together, they made a cosmic constitution that said that they could never kill any life form ever again. And they brought together all their technology, all their massive destructive technology, and they merged everything together into an entity called Techomaya and gave her a celestial kingdom. And she is the governor of this cosmic constitution. What she did was that she actually created an augmented battleground for the kings so that they can now play, they can still dominate each other and they can still fight each other, but they're doing it in an augmented world. So on one hand, they have to balance economy, and on the other hand, they have to balance war. But now it's not actually a physical war that they kill each other, but they do it in an augmented world, which is called Starfall. The game like setup in terms of the economic play. So there's a economic, macroeconomic factor in it where everything need to be work together. Not one player would be able to dominate this game. It needs to be hundreds, if not thousands, of players that come together. And the way that we structured it is that you have the king, but it's a democratic king, meaning he is the king, but everything underneath him is governed by a DAO, or a decentralized autonomous organization. And the king has 2 types of like players, so to speak, in his kingdom. There are tycoons and there are warlords. Each of them have a separate like challenge. But what we are catering to is that the king, the tycoons, and the warlords are providing the basis for people that want to play and earn, but also people who want to play and just for casual play. And you'll see that we're actually focusing a lot on the casual play and making this a really fun, high-paced, action-packed game. But there's the earner like in it, because we want this to be a play to earn game. And there's a socioeconomic aspect of it, sitting in Sri Lanka, not far from India. I know that there's a lot of potential in actually having games
provide additional income for people around the world. So we have absolutely the top of the notch modelers and animators and game designers. I snatched them from AAA studios that I work for, and we are all just coming together to make this game like the best possible aesthetic, fun, action-packed game. So this is just a fun animation of one of the lions that we made in it. So to come back to the warlord and the tycoons, the warlord managed the war effort, and they're using the castle and Starfall inside the King's Island to do it. But what's important is that because of the way that everything is structured, they actually have to contract players to fight for them in Starfall. So imagine that the king has a lot of warlords, and they manage their own little like army inside of Starfall, and they have to manage it from an economical point of view, on a communication and point of view. So it is really a community-driven effort, where communities and teams that work together well is highly like has a massive advantage over teams that do not. So one of the key things is that all economy resources are created. There's nothing that is given by the game. Everything has to be created. And this is one of the key things in our whole model, is that when you have a community, you rely on other people to help you get to where you are. So that's why there's the distinction between tycoons and warlords, because tycoons manage the economy and generates the resources. So they manage the orb and the mines on the island, and that enables players to go in and create all the resources that is needed for the warlords and all the players inside of Starfall to actually play and compete. So there's a macroeconomic play in this, where players that are interested in making that type of gameplay is able to actually just own a mine and contract players to operate the mine and generate the resources, and then they sell it inside of Starfall like a business. So and inside the Starfall, you will have an economy of its own, where people actually have the money ready and the economy to actually buy these resources. So it's a kind of a macro economic play on what actually goes on in the world. So in the gameplay, we have space fighting teams that are able to generate and have to defend the logistic movement from the King's Island into Starfall, and that's done through spaceships, and these spaceships needs to be defended. So there can be raiders that attack other kings' spaceships with the logistic, with all the resources, and then you have players that need to defend them. And of course, they are awarded and benefited for defending the logistics. So resources is everything in this game, and they can build up their spaceship, and they can upgrade their weapons, and they have higher cargo holds. So again, they can build on this blueprint of their own. So they are like the Air Force of the King's army. Now, the second is the actual on the ground fighting, and that's being done through robots. So robots that are controlled by these lions way out of this augmented world. So they actually submerge themselves, just like you would see in like the Matrix, into pods, and in those pods they control their warrior robot. And these are the concepts that we're working on for the robots. But as you can see, they have the lion traits. They're very fierce in their way to engage. So this is an action game. And one of the things that is really important is that you have this top-down view
And this is just an example of the gameplay and the intensity and the quality and everything that we're building. And you will have this top-down view of this world where you run around as an individual player, but in a massive war effort where multiple kingdoms and multiple kings have armies and mercenaries and teams that are building up logistics and moving logistics, and all in between you just one player that is trying to kind of survive. But that's where the community comes in, and you have to work it like a real like war effort, where one thing is it's fun to play, but on the other hand, it's also very important that you build it as a community, and the better you are at actually driving this as a real army, as a real kind of community that has a lot of like stability, there will be a big upside when you actually play the game. So where we are right now is that we have opened up to a very early alpha of the DApp, which is the economy-driven kind of base of the game. We're also planning on doing a endowment of our Celestial Coin, which means that by Celestial Coins, you'll get access to the overall voting rights of how the game is being developed and how we're gonna do the tokenomics, like moving forward and everything. And then we have the beta depth with how you contract players. But to give you a visual, it's like having an army where you have to enlist or you have to contract professional soldiers to actually give them a contract, and you stake tokens in that contract, would give them automatically resources in the game that they have to work with and improve. And every time they kill someone or they destroy something, they get a bounty. So everything in the game is bound on bounties. So the longer you survive, the better you are, the higher the bounty is going to be on you as a person, or the team, or the ones you're playing for. So it'll draw more attention, and basically people will go for you because you are a higher valued like target. And that's how the economy inside the game kind of works. So we'll open up for the Starfall early alpha once we get to the point where we're really satisfied with some of the gameplay and the action in it. And then we're introducing something which is also completely new in the space, is that we're going to do like a finance central bank loan option, just like a real world, where you have people and players that can actually stake tokens or stake coins in order for other players inside the game to make a small micro loan for them to benefit and pay back with the earnings they get from the bounty that they're going to generate in the game. So we have actually completed kind of the spectrum from the high end kind of whale investor type that just want to have like a passive income based on all of these players and how they play, all the way down to the casual player, which can basically play this game free with no strings attached, and they can do micro payments for skins and all that if they want to. But basically everything from A to Z is covered. So yeah, we do have a lot of interest, and lately we've been meeting several times with Binance, who is focusing heavily in coming next year, when they just like everything is up in the air right now. But essentially they're going to focus heavily on GameFi next year, and we're working closely together with them in order to get like all the needed like eyes on this project from the grassroots like point of view. Like I said, it's a socioeconomic play-to-earn game, which means that we're targeting people. We're developing parts of this game for mobile, so that it can, in the long run, become a sustainable job for some people. That's our purpose. That's our mission. We wanna use this as a gamified way of
creating jobs, and not in the way where it's just about getting more people to invest, but we have several alleys of revenue type of economy in the game. And yeah, that's where we are. And we do have also a mission statement where we want to also educate young people in esports and esports management, and some of the production and casting and streaming and psychology and nutrition around esport as an athlete. So that's kind of our angle. So yeah, that was a very quick introduction of a massive project, information about what we are, and I'm happy to answer any questions and stand by and everything. The reason why I got so interested with Adam and the celebrity coin is, apart from Adam being like who he is and like a nice figure in himself, also I really like the idea and the project in the way of entertainment and movie creation, and already being at a level where you launch the coin in the middle of a bear market and everything. And I do see a lot of like I see a lot of collaboration elements that we can do the projects between, but also in terms of including celebrity coin as a burning mechanism inside the game, which adds to the economy, and then also rewards you as celebrity coin holders and engaging in like in the game kind of tokenomics of King of Kings. So yes, that was a kind of a quick run through. Thank you very much, Vincent. Lovely, mate. What a presentation. Yes, you have made you made my day today. You opening how we normally proceed with this. Yeah, Vincent, thanks a lot. You are creating a lot of opportunity for people. I don't know if you're talking, Adam, but I can't hear you at least. Yeah, आवाज आ रही है लोगों को? Asif Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, Vincent, people can hear me. Maybe I'm in the meeting room on the top floor, so maybe my internet is not very good. Vincent, amazing, very nice, very nicely done. No, I have sound. Sorry, I had taken off the sound. Okay, I'm here now. Yeah, sorry, I had taken off the sound. Yeah, very nicely presented. I know I have given you very less time to present everything, but what you did was fantastic, and people understood you're going to create a lot of millions of jobs the way things are. And I can imagine how big this, Douglas even appreciated the kind of software we are building, and we are going to work together. So thanks, Vincent. Thank you very much. And let me speak to now community. Yes. Yeah. Hi, Asif ji, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yeah. So thank you everyone. मैं आपने देखा कि विंसेंट जी ने एक्सप्लेन किया जो इनका प्रोजेक्ट है, जो गेम है, जो हमारे साथ मिलकर करना चाह रहे हैं. आई डोंट नो कितने लोग गेम से बिलोंग करते हैं. जो गेम्स में है उन्हें मालूम है कितना ह्यूज अपॉर्चुनिटी है. विंसेंट के हिसाब से उन्होंने कहा 60 मिलियन कुछ भी कॉइन नहीं है गेम के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं जब गेम लोग खेलेंगे तो कितने कॉइन्स यूज होते हैं. तो मैंने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और ऊपर वाले ने मिलवाया है. जब टफ टाइम था, जब हमारा समय खराब चल रहा था, तो ऊपर वाले ने ऐसे लोगों से मिलवाया कि शायद मैं उसको चमत्कार ही मानता हूँ. और दूसरी बात ये है कि मैं कम्युनिटी से ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखे. हमारा काम बहुत अच्छा, बहुत सही हो रहा है. मैं कोई चीज भी लीक नहीं कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है. काम बहुत जोर तोड़ से हो रहा है, और जो चीजें आएंगी, बहुत सी अच्छी सी चीजें आ रही, नई चीजें आ रही हैं, जिसने हमारी कम्युनिटी को, हमारे प्रोजेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो. अब हमने बड़ा एग्रेसिव स्टेप ले लिया है. पहले हम लोग डिफेंसिव थे, अब हम एग्रेसिव हैं. अब हमारा जो काम होगा, अब जो होगा वो पूरा सॉलिड अच्छे तरीके से आएगा. और आप लोग चिंता ना करें कि अगर आप लोग को जो
हुए हैं कि सर स्टार्ट करें, हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि एल बैंक में हम ऑलरेडी आ गए हैं। एल बैंक का हमने सरप्राइज दिया था, हमने किसी को नहीं बताया था, और जब लॉन्च हो गया तब आप लोग को मालूम चला। तो ऐसे कई सरप्राइजेज आ रहे हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं या घबरा रहे थे कि एडम जी तो स्कॉटलैंड भाग गए हैं, भाई मैंने स्कॉटलैंड ही भागा हूं, मैं परदेसी जरूर हूं, पर परदेसी होके भी मैं भागा नहीं हूं, चिंता ना करें, मैं भागूंगा नहीं। तो मैं हूं, डटा हुआ हूं, लड़ रहा हूं, हार नहीं मानूंगा। ऊपर वाला अगर नहीं चाहेगा हराना मेरे को, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। ग्राउंड लेवल में जो भी जितना भी जो करे, हम उसका हमसे लड़ेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। अभी कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हमारे एकदम एग्जैक्टली नाम कॉपी किया, हमारा सारा चीज कॉपी पेस्ट कर दिया है। थैंक यू टू कुछ हमारे होस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, को होस्ट इन्वॉल्व थे, और शायद मेरे को ये भी मालूम है कि इन्होंने लॉन्च किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई सरप्राइज नहीं है। नाम भी उन्होंने बड़ा ऐसा नाम चूज किया है जिससे कि CE लगे कि सेलिब्रिटी कॉइन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा भाइयों, इनके झांसे में ना आना, और ये लोग जो हैं ये हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए शुरू से लगे हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी कॉइन इतना बड़ा हो चुका है कि लोग उसको थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं। और ये भी कहूंगा, जो कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज उनके साथ जुड़े रहें, उनको छोड़ के ना आए। मैं किसी को प्रोजेक्ट को ब्रेक करने नहीं आया हूँ। मैं हरदम कहता हूँ कि जब समुद्र में जब आता है ना, ज्वार भाटा आता है, तो जब जितना समुद्र ऊपर जाता है, सारे जो शिप होते हैं सारे ऊपर जाते हैं। और अभी विंसेंट ने यही कहा कि ये बियर मार्केट में लॉन्च किया हमने। बियर मार्केट, इस समय मार्केट बहुत खराब जब चल रही है, तब वो कह रहा है कि इतना प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा, उनका भी ये मानना है। वो लोग बहुत कहते हैं ना, दूरभावी होते हैं, उनको बहुत, ये लोग जो है, ये लोग पहले से ही रिसर्च करके बैठे हुए हैं। हमारा प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए हमसे 2-3 महीने से हमारे साथ हैं। इन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद ही हमारे साथ जुड़ने का डिसीजन लिया है। और मैंने इसलिए डिसीजन लिया क्योंकि बाइनेंस में आने का हमें फायदा होगा। और दूसरी बात भाइयों, मैं ये आपको बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो अब हमारा जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी जो दी है 3 महीने का, बीच में 1 महीना बढ़ा दिया क्योंकि हमारा 1 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, MLM की मिली है या रेफरल की मिली है, जिसको हम MLM नहीं कहते, रेफरल कहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। पहले भी मैंने कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, इसको मत मिस करिएगा। 3 या 4 महीने आपके पास हैं, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे MLM से अलग हो जाएंगे। और जो लीडर जो ऑलरेडी हैं, जिनका स्टेकिंग माइनिंग चल रहा है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे वैसे रहेंगे। तो जिनको, हमारा प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि अगर MLM के भरोसे नहीं है, आप देख सकते हैं एक बार में हम सारा आप लोग को जो भी कमाते हैं, जो भी होता है, वो आप लोग को मिल जाता है और मिलेगा। रीस्टेकिंग रहेगा, मगर ये है कि आने वाले समय में जो लोग अभी जुड़ गए हैं वो जुड़ गए हैं, बाद में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और बहुत से अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट नहीं किया, वो एक्टिवेट कर ले, नहीं तो वो परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे, उसके बाद वो कभी आप उसको एक्टिवेट कर ही नहीं सकते। तो इसका भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा। और रही बात यह है कि मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, पेशेंस रखिए, बहुत सी अच्छी चीजें आ रही, नई नई चीजें आ रही हैं। और ला टोकन में जो प्रॉब्लम है, प्लीज ला टोकन सपोर्ट टीम से बात करें। अभी ला टोकन पे मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो नई चीज आने वाली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ला टोकन से। ला टोकन को होल्ड में रखा हुआ है मैंने, वो प्रेशर है उनका कि सर आप स्टार्ट करें, पर अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो चीज आ रही है उसके बाद ही हमें स्टार्ट करने में फायदा है। और प्लीज, आपके लीडर्स अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर्स को मतलब कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनको हमने मना किया हुआ है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना करे, क्योंकि हमें पहले ही मालूम था ये जो प्रोजेक्ट कल दिखाई पड़ा है आप लोग को, ये आने वाला है। हमें एक हाथ से कम 15-20 दिन पहले मालूम चल गया था कि लोग कॉपी पेस्ट करके करने वाले हैं, कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं यूके में। तो आप समझ सकते हैं उनका क्या पॉलिसी है कि सेलिब्रिटी कॉइन की तरह बना के लॉन्च करके, भगवान जाने फिर वो क्या करेंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ मत इन्वेस्ट करिए, जिसकी इच्छा करिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, किसी भी जिस कंपनी से आप जुड़े हैं उसमें जुड़े रहिए, एक बास्केट में कभी एक अंडा रखना नहीं चाहिए। मैं शुरू से मैं कहता हूँ, मैं विश्वास भी करता हूँ हर प्रोजेक्ट में आप काम करें, मगर मैंने लीडर्स को ये बोला है, अगर वो वेलकम है, किसी प्रोजेक्ट में जाकर काम कर सकते हैं, मगर अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट से को होस्ट नहीं रहेंगे। बस उनको यही डिसएडवांटेज है, रेस्ट कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाले समय में बहुत अच्छी न्यूज आ रहे हैं। और रही बात यह है कि
कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉइन का ये वो, आप ये देखिए बिटकॉइन भी को भी 13 साल 14 साल लगे इतना ऊपर आने में, तो हमें भी कुछ समय दें। अगर आप 6-7 महीने तक हम पे ट्रस्ट करते हैं, जुड़े रहते हैं, विश्वास करते हैं, मैंने पहले शुरू से ही आपसे कहा है कि उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा मत करिए। और लोगों ने जब लूज होने लग गए तो वो सब लोग सामने आ गए, अपनी बताने लग गए ये है वो है। पहले ही मैंने बोला हुआ है कि इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज कर सकते हैं। बहुत से प्रोजेक्ट है दुनिया में, हमारा प्रोजेक्ट टॉप लेवल नहीं है, दुनिया में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट हैं, आप वहां पर भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आप लगे रहे, कम्युनिटी की तरह रहे। और इस बार तो चेंजेस आएंगी, पैकेजेस बड़े नहीं आएंगे, छोटे ही पैकेज आएंगे, क्योंकि हमें कम्युनिटी को भी सेव करना है। तो क्योंकि हमने कितनों को मना किया ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, मगर कुछ लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बाद में उनको लगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है। रेस्ट आपके ऊपर है, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इतना कहता हूं, मैं आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं गिरूंगा। हो सकता मैं गिर जाऊं, फिर खड़ा होऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो यही मेरा है, एम है कि आगे बढ़े, अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन करे। थैंक यू वेरी मच आसिफ जी, बैक ओवर टू यू। मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, एक बहुत अच्छी न्यूज के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो उस पर ही हमारा डिस्कशन चल रहा है, शायद एक बड़ी न्यूज और भी आने वाली है। थैंक यू आसिफ जी, ओवर टू यू। Thanks, sir. Thanks. थैंक यू सर, Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे बीच आए और साथ में जो प्रोजेक्ट आप विंसन जी के साथ लेके आ रहे हैं सर, वाकई मैं कमेटी को कहना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य रखिए। जहां इतने दिन आपने दिए हैं, कुछ दिन और की बात है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं। आज विंसन जी ने जो प्रोजेक्ट हम लोग के सामने लेके आ रहे हैं, ऑलरेडी वो ब्लॉकचेन और गेमिंग एक्सपर्ट हैं। और गेमिंग की दुनिया में आप जानते हो दोस्तों, बहुत धमाल मचता है। हर घर में, हर घर में गेमिंग का यानी इंटरटेनमेंट का सबका उससे लगाव जरूर होता है और सब लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना कहते हुए चलते हैं, टाइम को भी देखते हुए नेक्स्ट स्टेप के लिए आसिफ जी प्लीज। जी संजीव जी, मैं कुछ बोलूं? यस यस सर, वेलकम सर, वेलकम। जी जी, आइए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते सबको, सब सर्वटी फैमिली को। सो थैंक यू वेरी मच आदम सर, आज जिन्होंने टाइम निकाला और विंसन को, जो एक बहुत बड़े ब्लॉकचेन एक्सपर्ट और गेमर है, उनको इनवाइट किया। बिकॉज बड़े दिनों से इनकी मीटिंग्स चल रही थी, बिकॉज विंसन इज वेरी इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी कॉइन को ज्वाइन करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट जो है उनका वो सेलिब्रिटी कॉइन के अंदर लाने के लिए। तो एडम सर ने काफ़ी रिसर्च और उसके बाद इसको फाइनल किया। बिकॉज एडम सर को बिल्कुल अंदाज़ा है कि जितनी कम्युनिटी जो जुड़ी हुई है सेलिब्रिटी कॉइन को लेके, उनके लिए को जो भी ऐसी चीज़ लेके आए जो फ़ायदेमंद हो, और सेलिब्रिटी कॉइन की जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग को डबल करे। सो प्ले टू अर्न जो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, मार्केट में आ गई हुई है, और हर मेजर कॉइन जो बड़ा कॉइन जो कम्युनिटी है वो इस चीज को अडॉप्ट कर रही है। और जो ही कम्युनिटी यूज केस के ऊपर डिपेंडेंट होती है वो ही ग्रो करती है। तो जैसे ये गेम एक बिल्कुल प्ले टू अर्न है, जैसे इसी तरह हमारा जो इंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म का वॉच टू अर्न, तो हम हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे सब आप पैसा कमाएंगे, कोई अपना पैसा गवाएगा नहीं। तो ये एडम सर की जो विजन और जो उनकी प्लानिंग है कि हमारी कम्युनिटी को ग्रो करना है इंटरनेशनली, ये उसका एक पहला स्टेप है। तो ये आज एक हम सबके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी न्यूज़ है कि हमारी जो सेलिब्रिटी कॉइन डे बाय डे बड़े से पूरी दुनिया में छाने वाला है, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी छा जाएगा, ताकि जो सेलिब्रिटी कॉइन की फैमिली के जो शुरू दिन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फख्र महसूस हो कि उन्होंने किसी अच्छी कंपनी और अच्छे ब्रांड को ज्वाइन किया था। तो ये हम सबके लिए आज बड़ी अच्छी बात है कि हमें एक आज अच्छी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमारी आई है। डेफिनेटली एक बड़ी डिफरेंट किस्म की गेम है। हम सब गेम लवर हैं, हमारे घर में हमारी आने वाली जनरेशन गेम लवर है, तो उनके लिए हम जहाँ पर वो बच्चे गेम खेलेंगे उनको हम ये गेम खिलाएंगे ताकि वो पैसे भी कमाएं, तो फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा ऐसे उनका। कुछ के वक्त जाया पहले गेम पे वैसे करते थे, अब ये कुछ के वक्त गेम खेलेंगे तो साथ साथ पैसे भी कमाएंगे। तो हम लोगों को कहाँ से फायदा होगा कि इसमें जो गेम में जो वो किंग्स विंसन एक्सप्लेन कर रहा था, जो उसमें उसमें उसके आलात थे उसके, जो जैसे अगर हम सब जानते हो गेम इंडस्ट्री से
कि पबजी में कोई भी चीज अगर यूज करनी हो, कोई भी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट यूज करना हो, उसको बाय करना पड़ता है। तो इस गेम के अंदर वो लोग होंगे जिनके पास सेलिब्रिटी कॉइन होगा, वही बच्चे गेम या जो बड़े गेम खेल सकेंगे होंगे। तो ये एक बहुत कॉइन को ऊपर ले जाने के लिए, जिससे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन की एक तो सप्लाई ऑलरेडी बड़ी लिमिटेड रखी हुई है, तो जैसे वो लिमिट होगी सप्लाई, वैसे कॉइन की प्राइस इतनी ऊपर जाएगी, डिमांड इतनी हाई होगी कि हम सब लोगों के जो कॉइन है वो इंशाल्लाह वेरी सून, जो एडम सर का टारगेट है कि $100 प्लस होने होगा, वो हम लोग अचीव कर लेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल कम्युनिटीज और लीडर्स यही सोचते हैं कि प्रोजेक्ट इतनी जल्दी नहीं आने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी टाइम इतना फास्ट जा रहा है कि जो बंदा डिले कर जाएगा वो रह जाएगा। इसलिए एडम सर का विजन यही है कि सब यूज केस अपने मार्केट में ले आए, ताकि कॉइन की जो प्राइस है वो नीचे ना आनी पाए, ऊपर से ऊपर जाए। और ये अच्छा वक्त है, ये अच्छा टाइम है जो इस टाइम एल बैंक में लोग बाय करके स्टोर कर रहे हैं, कॉइन रीस्टेकिंग कर रहे हैं। ये उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और ये लिमिटेड है। आपको पता है किसी टाइम भी ये अपॉर्चुनिटी, जैसे ही कॉइन की प्राइस ऊपर चलेगी, कॉइन मिलना बंद हो जाएगा मार्केट में, और जो लोग होल्ड कर जाएंगे वो ही कमा सकेंगे। ये एक ट्रस्ट की बात है, और उस ट्रस्ट के ऊपर हम सारी दुनिया चलती है। हर धंधा, हर कारोबार, एवरी बिजनेस इज ऑन ट्रस्ट। किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, ट्रस्ट होता है सिर्फ। तो ऐसे जैसे हम लोग कॉइन के ऊपर, बिटकॉइन पे लोग ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं, करोड़ों का बिटकॉइन लोगों के पास है। सो ऐसे ही कॉइन की दुनिया एक ट्रस्ट के ऊपर चल रही है, और वो ट्रस्ट वैसे तब इंसान करता है जब दिखता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट है, जो नजर आ रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं, ना कि सिर्फ बोल रहे हैं कि हमने इतने लोगों को दिए दी। हर चीज हर लोगों के सामने हम लोगों ने रखी हुई है। एडम सर की यही एक जो खूबसूरती है इस प्रोजेक्ट की, कि हर चीज अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। हमें अपने फाउंडर पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपने लीडर्स पे वैसे ही भरोसा और विश्वास रखना चाहिए, और इंशाल्लाह हम ग्रो करते रहेंगे। मेरा ख्याल मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, तो थैंक यू वेरी मच संजीत जी एंड आसिफ जी, ओवर टू यू। आज आप बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सैफ जी। दोस्तों, आपने सैफ सर को सुना। वाकई जो भी चीज अभी इन्होंने शेयर करी है, वाकई काबिल तारीफ है। हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा करके जाएंगे, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। आसिफ जी। ओके सर, ओके। दोस्तों, मैं सुमन लखनऊ इंडिया से आज आपके साथ अपने रियल विचार शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने खुद अनुभव किए हैं। आज मार्केट में क्रिप्टो के बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, क्योंकि